तो आज हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस पार्ट 2। दिस इज योर सेकंड क्लास स्पीड टाइम डिस्टेंस का। टुडे आई विल डिस्कस एवरेज स्पीड। First of all, we have to know what is called average speed. So what is the meaning of average speed? Average speed means you have to find the ratio of total distance by total time taken. टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखो, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई सपोज यू आर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था। ओके, देखो फर्स्ट आई राइट हियर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो हियर व्हेन द यू हैव टू फाइंड द टोटल टाइम हियर, then you will find d1 by s1. You will write d1 by s1 here, and here you cover d2 distance in s2 speed. So your time taken will be equal to d2 by s2. So this one is your average speed. When you cover two different speeds, d1 km and d2 km with speed s1 km per hour and s2 km per hour, then your average speed will be equal to total distance, that is d1 plus d2 divided by total time taken, d1 by s1 plus d2 by s2. So this one is your formula for average speed. Okay, so now I will discuss a question in this formula. Here is a question. A train travels 450 km and another 740 km with speed 45 km per hour and 74 km per hour. व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो यहाँ पे तुम लोगों को निकालना है कि एवरेज स्पीड कितना होगा। देखो यहाँ पे क्या है ना, ए ट्रेन ट्रैवल्स 450 किलोमीटर डिस्टेंस, दिस वन इज योर डिस्टेंस 1 एंड अनदर 740 किलोमीटर, दिस वन इज योर डिस्टेंस 2 with speeds 45 किलोमीटर per hour and 75 किलोमीटर per hour. This one is your S1 and this one is your S2. If I will draw a diagram, then this one will be like this. First it covered 450 kilometer, then it covered 740 kilometer. In first case it covered with speed 45 kilometer per hour, and in second case it covered with speed 74 kilometer per hour. So your average speed will be equal to total distance, that is 450 plus 740 डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, 450 बाय 45 एंड हियर द टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 740 बाय 74. सो इट विल बी इक्वल टू 1190 डिवाइडेड बाय, हियर दिस वन इज 10 आवर एंड दिस वन इज ऑल्सो 10 आवर. सो 1190 डिवाइडेड बाय 20, that is equal to 59.5 kilometer per hour. So this one is your average speed, that is equal to 59.5. Option B will be the right answer. I hope ki you understood this solution and you can solve this question also. Now I will go to the next question. Come to the next question. Here is another question. In this question it is given that a train travels 50 km and another 70 km with speed 25 km per hour and 35 km per hour respectively. Okay, now come 42 km per hour. This one is your answer. Okay, so your answer is equal to 42 km per hour. Now you have to remember this formula. When the person covers two equal distances with two different speeds, then you have to apply 2 into s divided by s1 plus s2. This one is your average speed formula for two different speeds and covering with the different distances. Okay, now come to another question, another example. Here a man covers half of the journey at speed 60 km per hour and the remaining half with speed 40 km per hour. This is average speed for the whole journey. The same formula, d kilometer first covered, then another d kilometer covered. Here the speed is 60 km per hour
and here the speed is 40 km per hour. Now we will apply average speed formula, that is equal to into 60 into 40 by 60 plus 40, that is equal to 4800 by 100, that is equal to 48 km per hour. So your average speed will be equal to 48 km per hour. C will be the right answer. Okay. Now if I will apply another trick, that is LCM method, to find the average, apply LCM method. What is LCM method? Now see here, the person covers two equal distances. So first of all we have to find the LCM of the two different speeds, 60 km per hour and 40 km per hour. What is the LCM? Equal to 120. Let it is 120 km, that is first he will cover 120 km with speed 6, then he will cover another 120 km with speed 40 km per hour. So here the time taken will be, if he will cover 40 km with speed 60 km per hour, then the time taken will be equal to 2 hours. That is 120 by 60, that is equal to 2 hours. Now if he will cover 120 km with speed 40 km per hour, then his time taken will be equal to 120 by 40, that is equal to 3 hours. I am drawing a diagram. First he covered 120 km distance, covered another 120 km distance. Here it covered with speed 60 km per hour, and here he covered with speed 40 km per hour. Here the time taken is 2 hours, and here the time taken is 3 hours. Okay. Now what is the average speed? Speed equal to total distance, that is equal to 2 into 120 divided by total time taken, 2 hours plus 3 hours, that is equal to 5 hours. So your average speed equal to 48 km per hour. ओके. तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना डायग्राम हमेशा नहीं चाहिए. यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे तुम लोग पता है कि यहाँ पे 120 किलोमीटर हुआ वन पार्ट को, तो यहाँ पे दो डिस्टेंस मतलब 2 डिस्टेंस कवर. सो we have to put 120 and 120, that is equal to 2 into 120 divided by total time taken. Your total time taken is 2 plus 3, that. So you will apply this one only. You don't need to draw this diagram always. Okay. You can solve this method by question by this method also. 2 into 120 by 2 plus 3, that is equal to 5, and you will get your answer 48 km per hour. यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करो. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था ना, यहाँ पे क्या था ना कि दोनों का रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द LCM 70 and 30. I am doing this here. Okay, so I am doing it here. Now I will apply the LCM method. Now see, 70 km per hour and 30 km per hour. Here is the LCM to 10 km. Here the time taken will be equal to 3 hours, and here the time taken will be equal to 7 hours. Here the time taken will be equal to 7 hours. Okay. What is the total time taken? Not 10 hours. So press speed equal to 2 into 210 by यहाँ पे 10 hours. So you have to 42 km per hour. Okay. Now you can solve the question with LCM method, and LCM method will be easy. Okay. Another example. Now come to this question. A person divides his total route of journey into 3 equal parts and decides to travel them at speeds 40 km per hour and 15 km per hour. What is his average speed for the whole journey? Okay. Now देखो यहाँ पे क्या होगा ना, if you will go through formula, 3 equal distances, d kilometer with 3 speeds, S1, S2 and S3. Formula will be equal to average speed equals to
3 times S1 S2 S3 divided by S2 plus S2 S3 plus S3 S1. This one is your average speed formula for three different equal distances. ओके, यहाँ पे अगर तुम लोग फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या होगा ना, देखो 3 टाइम्स इंटू 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 15 प्लस 40 इंटू 13, sorry 15. Now you will solve this one and you will get your answer equal to 24 km per hour. By solving this one you will get your answer 2 km per hour is the average speed. You can use this method, this formula, or you will go through LCM method, or you will go LCM method. Now come to LCM method. First, there are three different speeds: 40 km per hour, 30 km per hour, and 15 km per hour. LCM, the LCM equal to 120. ओके, तो यहाँ पे कितना टाइम हुआ 3 आवर, यहाँ पे टाइम हुआ 4 आवर एंड हियर इट इज 8 आवर. सो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन इक्वल टू 15 आवर. सो योर एवरेज पर डू, there are three distances, so 3 into 120 by 15 hour taken is 15 hour. Now you will cancel 15 with 120, here it will be 8 km per hour, and 8 into 3, that is equal to 24 hour. So 24 km per hour is your average speed. Either you will formula or you will apply LCM method, and I think LCM method is better than this formula. Okay, so it will be easier formula, this method, LCM method. Okay, so I hope you understood this formula, sorry, this method also. Now come to next one. In this question it is given that a person total route of journey into 3 equal parts and decides to travel them at speeds 40 km per hour, 60 km per hour and 120 km per hour. The average speed. Come to the LCM method directly. Now we will apply the LCM method. The first speed is per hour, second speed is 60 km per hour, and the third speed is 120 km per hour. First of all, we have to take the LCM. The LCM is equal to 120. Let the distance is 120 km. So first you cover the speed. So here the time taken will be equal to 3 hours. Then the time taken will be equal to 2 hours. Then the time taken will be 1 hour. So the time will be equal to 6 hours. So your average speed will be equal to 3 times 120 divided by 6, that is equal to 60 km per hour. So your average speed equal to option A 60 km per hour. Method will be easier. Yes or no? Okay. Now come to the another question, another example. A car travels the first 1/3 of a certain distance with speed 10 km per hour, the next 1/3 distance with speed 20 km per hour, last 1/3 distance with speed 60 km per hour. That means here it covered 3 equal distances with 3 different speeds. Now we can also LCM method here also. Apply the LCM method directly. 10 km per hour, 20 km per hour, then 60 km per hour. What is the LCM? The LCM equal to 60 km. It is 6 hour. Here it is 3 hour, and here it is 1 hour. Total time is 10 hour. The average speed will be equal to 3 times 60 by 10. That is equal to 8 km per hour. Okay. So option A is the right answer, 18 km per hour. Now come to another. Here there is another question, but in this question it is given that
A man covers one third of the journey at speed 60 km per hour and the remaining one distance at 40 km per hour. What is his average speed for the whole journey? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि जो डिस्टेंस जो है ना, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है। कैसे करोगे देखो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस बाय नॉर्मल मेथड। First of all, I will solve this question with normal method. Then I will tell you LCM method. Now see, it covered one third distance, that is d distance, and the next 2/3 of d, it covered with speed 40 km per hour. One third of the distance, it covered with speed 60 km per hour, and the next 2/3 distance, it covered with speed 40 km per hour. So your will be equal to total distance, that is d किलोमीटर, डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, यहाँ पे d 60, d/3/60, और यहाँ पे टाइम कितना होगा 2/3 of d by 40. So the average speed will equal to d by 180 प्लस, यहाँ होगा ना 2 से कैंसिल करो तो 20 into 3 60, so d/60, और that is equal to d by d taking common, 180 is the LCM, here 1 and here will be 3, cancel, so 180 by 4, 180 by 4 means 45 km per hour. Okay, equal to 45 km per hour. I hope you got this answer, you understood this method. Okay, now I will solve by LCM using LCM method. First of all, I will erase this one. Let me erase this one. Okay, now see, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो 60 और जो 40 है ना, फर्स्ट यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो इनका 120. ओके, तो यहाँ पे हुआ 2 आवर और यहाँ पे हुआ 3 आवर. नाउ सी, he first 1/3 distance, then the 2/3 distance. If I will take, there are three distances, 120 km, 120 km and 120. टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा ना, 360, तो यहाँ पे हो गया 1/3, मतलब 120 किलोमीटर होगा, और यहाँ पे 120. ओके, फर्स्ट आई took, there are three different distances, 120 km, 120 km and 120 km. Is your total distance, that is 360 km, and he first covered 1/3 distance, that is 120 km with speed 60 km per hour, and the remaining with speed 40, that is here it is the 40 speed 40 km per hour, and here it is also 40 km per hour. He covered 1/3 distance with speed 60 km per hour and the remaining with speed 40 km per hour, that is 120 km with speed 40 km and 120 km with speed 40 km per hour. So here the average speed will be equal to, तो यहाँ पे टाइम कितना होना 2 आवर, यहाँ पे 3 आवर, यहाँ पे टाइम कितना होना 3 आवर. So your average speed will be equal to total distance, that is 3 into 120 divided by total time taken, 8 hours. So here 45 km per hour. Okay, I hope you got this method. Now come to how to solve this one by method and easily. Now see, if I will take, when the distance is given 1/3 distance, that means the total distance, take the total distance is 3 part. Okay, here it covered 1/3, तो 3 का 1/3 कितना होगा ना, 3 का जो टोटल डिस्टेंस जो 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट का 1/3 मतलब 1 पार्ट होगा,
तो ये रिमेनिंग यहाँ पे कितना होगा, 2 पार्ट होगा। तो यहाँ पे तुम लोग क्या, यहाँ पे जो डिस्टेंस का यहाँ पे जो 1 पार्ट हुआ और यहाँ पे 2 पार्ट हुआ, बस यहाँ पे आवर निकालने के बाद यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 आवर। तो यहाँ पे 2 पार्ट डिस्टेंस का हुआ, तो यहाँ पे टाइम का क्या होगा ना, 2 टाइम्स होगा। देखो यहाँ पे टाइम 2 टाइम्स हुआ था, यहाँ पे हो गया 6 आवर। सो व्हाट इज द टोटल टाइम नाउ ना, 8 आवर। सो योर एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 120। टोटल डिस्टेंस हम लोग ले रहे थे 3 पार्ट, तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, 3 इंटू 120 कर दिए। तो 3 इंटू 120 डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन इज 8 आवर। सो योर एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 3 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। यू कैन सॉल्व दिस मेथड बाय दिस मेथड। ओके, तो यहाँ पे तुम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करने की मतलब कोई नीड नहीं होगी, तो यहाँ पे तुम कर सकते हो। आई होप कि यू गॉट दिस आंसर। ओके, now I will explain you another method, another question with this method. Now come to, in this question it is given that a man covers 1/3 of the journey at speed 30 km per hour and the remaining 20 km per hour. Now I will write down directly LCM method. Here the speed is 30 km per hour and here the speed is 20. The total distance I will take 3 पार्ट, बिकॉज यहाँ पे 1/3 गिवन था। तो अगर यहाँ पे 1/3 गिवन है ना, तो टोटल डिस्टेंस 3 पार्ट। तो यहाँ पे 1/3 मतलब यहाँ पे 1 पार्ट होगा, 1/3 ऑफ 3 दैट इज इक्वल 1 पार्ट। रिमेनिंग डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हुआ, 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे टाइम हुआ तुम्हारा 2 आवर और यहाँ पे टाइम हुआ 3 आवर। सो दिस वन इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे 1 पार्ट डिस्टेंस था, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 2 पार्ट डिस्टेंस था, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना होना 2 आवर और यहाँ पे हो गया 6 आवर। सो व्हाट इज द टोटल टाइम ना, 8 आवर। ओके, नाउ योर एवरेज स्पीड विल बी 3 इंटू 60 किलोमीटर बाय 8 आवर दैट इज इक्वल टू 180 by 8 or 22.5 kilometer per hour. Will be called option C. I hope कि you got this method, you got this trick. Okay, you will solve any type of question with this method. Now come to another question. There is another question. Here it is given that a man covers 2/5 of the journey at speed 30 km per hour and the remaining at speed 20. What is the average speed? Okay, now see, अगर यहाँ पे जो 2/5 डिस्टेंस था ना, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को 5 पार्ट ले लो। अगर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 5 पार्ट ले लिए, 2 पार्ट, 2/5 मतलब 2 पार्ट और रिमेनिंग पार्ट मतलब 3 पार्ट। फर्स्ट 2 पार्ट डिस्टेंस इट कवर्ड विथ स्पीड 3 आवर and the remaining part it covered with speed 20 km per hour. What is the LCM? 60 km. Here the time taken will be equal to 2 hour and here the time taken will be equal to 3 hour. So 2 into 2, यहाँ पे डिस्टेंस, सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे डिस्टेंस था 3 पार्ट, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे कितना होगा ना, 4 आवर एंड 9 आवर। तो टोटल टाइम तुम्हारा कितना होना, 13 आवर। टोटल टाइम 13 आवर। सो योर एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 5 into 60 by 13 hour that is equal to by 13 that is equal to 23 whole 1 by 13 kilometer per hour. Okay, 23 whole 1 by 13. There is no option like this, so your answer will be option none of these. Option E. Okay, I hope you got the answer. Now come to the another question. Here is another question. In this question it is given a man covers 2/5 of the distance with speed 40 km per hour and the remaining with speed 60 km per hour. Find his average speed. तो यहाँ पे क्या करो, डिस्टेंस को ले लो 5, तो यहाँ पे 2 पार्ट और यहाँ पे होगा 3 पार्ट, क्योंकि 2/5 ऑफ द 5 दैट इज इक्वल टू 2, रिमेनिंग इक्वल टू 3। तो यहाँ पे स्पीड था 40 km per hour, यहाँ पे स्पीड था 60 km per hour. What is the LCM? Now 120. तो यहाँ पे टाइम हुआ 3 आवर, यहाँ पे टाइम हुआ 2 आवर।
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट डिस्टेंस था, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे हो गया 6 आवर, यहाँ पे भी हो गया 6 आवर, तो टोटल टाइम ना 12 आवर. So your average speed will be equal to 5 120. 5 part distance था, so 5 into 120 is the total distance by total time taken. Total time is, तो यहाँ पे 12 लिखो, तो यार इसको सॉल्व करो तो कितना हुआ 50 किलोमीटर पर आवर. I hope this method. Okay, now I am going to the next question. In this question it is given that a person covered 1/3 of the certain journey with speed 20 hour, 1/4 at speed 30 km per hour, and the rest at speed 50 km per hour. What is the average speed? तो यहाँ पे देखो, यहाँ 1/3 पार्ट, देन यहाँ पे 1/4 पार्ट. अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, तो यहाँ पे जो 3 और जो 4 है ना, तो डिनोमिनेटर में जो होगा, तो 3 और 4 का एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम कितना होगा ना 12 होगा. तो टोटल डिस्टेंस वी विल टेक 12 पार्ट. वी विल टेक द टोटल डिस्टेंस एज 12 पार्ट. फर्स्ट ही कवर्ड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस. 1/3 of 12 is equal to 4 part distance. Then it covered 1/4 of the total distance. 1/4 of 12 equal to 3 distance. यहाँ पे 4 पार्ट है और यहाँ पे 3 पार्ट, तो मिला के हो गया 7 पार्ट हो गया. तो बाकी बचा कितना ना 5 पार्ट. रिमेनिंग डिस्टेंस इज 5 पार्ट. तो यहाँ 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, यहाँ पे कवर हुआ 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड में. ओके, तो यहाँ पे इनका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 300, नहीं 150 किलोमीटर इज द एलसीएम. तो यहाँ पे टाइम टेकन कितना होगा 6 आवर. इफ यू विल कवर 150 किलोमीटर स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम टेकन विल बी 6 आवर. If you will cover with speed 30, then it will be time will be equal to 5 hour, and here the time will be equal to 3 hour. Now you have to multiply. Here the distance is 4 part, so you will multiply 4 here. Here the part, and you will multiply 3 here. Here the distance is 5 part, and you will multiply 5 here. So here it will be equal to 24 hour. It will be equal to 15 hour. It will be equal to 15 hour. Total time taken will be equal to 50. So your average speed will be equal to, what is the total distance 12 part, so 12 into 150 by total time taken 54. तो इसको मल्टीप्लाई जो सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे अगर 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 6 से डिवाइड करो तो हो गया 9, 3 से डिवाइड करो तो होगा 3, और 3 से डिवाइड 50 into 2 100, so 100 by 3, that is equal to 33.33 per hour. I hope you got this method. So your answer will be option D. Okay, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व. Now we will solve another question. Come to another question. In this question it is given that a person covered 1/3 of the journey with speed 20, then 1/4 of the remaining at speed 25 km per hour, and the rest at speed 30 km per hour. What is his average speed due to the whole journey? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पे देखो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग. तो यहाँ पे एक काम करो, फर्स्ट तो 1/3 एंड 1/4 था, तो इनका एलसीएम कितना 12 पार्ट हुआ. तो यहाँ पे टोटल जो 12 पार्ट, यू हैव टेक टोटल डिस्टेंस